हिल रही है अभी हिली बाहर बहुत ठंड है। What's up guys? I'm Piyush And I'm Pooja. and you're watching Canada Cocktails with some Australian twist. So Christmas and New Year is around the corner, which means vacations. And what we have planned, we are traveling to Tasmania from Melbourne on a 10 days road trip. हम अब बताएंगे आपको आज का प्लान। So basically on a very high level, the plan goes something like this. आज है 24 दिसंबर और हम जा रहे हैं मेलबर्न से डेवनपोर्ट स्पिरिट ऑफ तस्मानिया क्रूज में। We would be sailing tonight at around 10 p.m. क्रूज की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अपनी कार ले जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, अपना टाइम अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं, ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ कोई गया नहीं है शायद, और हम वहाँ जाएं और उसे फाइंड आउट करें। सो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। सो हम आपको अपडेट करते हैं व्हेन वी विल बी सेलिंग फ्रॉम स्पिरिट ऑफ तस्मानिया। थैंक यू। I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night and I contemplate for a while. So the kilometer goes to 0 and we'll see how much we covered in these 10 days. So now we are heading to Port Melbourne, जहाँ से हमें स्पिरिट ऑफ तस्मानिया सेल करने के लिए बोट करनी है। और हमारा सेलिंग टाइम है 10:30 आई गेस। Yes, 10:30. सो विल एक्सप्लोर, विल सी बोर्डिंग में कितना टाइम लगता है, वो सब, कार पार्क एंड ऑल दैट स्टफ। सो विल सी यू इन स्पिरिट ऑफ तस्मानिया देन। So here we are, Spirit of Tasmania Port Pier, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। और आपको सामने दिख रहा है Spirit of Tasmania शिप, नहीं दिख रहा होगा शायद, बट एंटर कर रहे हैं कार पार्किंग के लिए, आई गेस। Which way to go? Vehicle boarding entrance. Okay, this is it. So this is how it is. I think I'll need mobile to show the ticket. I'll show you from this camera how huge is it. It is. How huge it is. I hate these masks, man. Hello.
Alright, so this will be our room for the night in Spirit of Tasmania. So basically it has got 4 beds, but we are 2, so it's good. It's quite a small room, but good enough for 2 people. मुड़ तो रहा है। इन्होंने बोला था कि ये सीधा जाएगा विदाउट बम्प्स, बट दिस वेरी टाइम ये मुड़ रहा है और लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है। ये देख, आई थिंक इन शैलो वाटर्स। तो हमें 1 घंटा हो चुका है शिप में बैठे हुए और हिल रही है, हिल हिल रही है। रही है। अभी हिली। बाहर बहुत ठंड है और बाहर कुछ ज़्यादा ही हिल रही है, हाँ, तो लेकिन अच्छी है। मज़ा तो आ रहा है। एम्बियंस सुपर्ब है, एम्बियंस भी एकदम बढ़िया है। आप थोड़ा तो देख ही पा रहे होंगे, ये कैफ़े है, तो कैफ़े वन एरिया ऑफ द कैफे है। पीछे आई गेस एक और है, if I'm not wrong. नाइस एम्बियंस। एज ऑफ नाउ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, हो रहा है। और ऊपर से अभी पहले क्लाउडी था, अभी क्लाउड हट रहे हैं तो मून भी सामने है, मून का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। प्लान यही है, जब सब सो जाएंगे, थोड़ा रात और हो जाएगी तो बाहर जाके जब एकदम व्हेन देयर इज़ नो लाइट्स एक्चुअली, देन आई थिंक इट वुड बी मोर ब्यूटीफुल। बट एनीवे टिल नाउ इट्स वेरी गुड। जब हम एक्चुअल समंदर में होंगे तब थोड़ा सा अगर मौका पड़ा तो विल शूट आउटसाइड। फिर हिला लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं हो रहा, इतनी तो फ्लाइट भी हिलती है, तो इट्स ओके। फ्लाइट तो कभी कभी ऐसे बट दिस इज हिल रहा है। मेरे को लग रहा था कि कम हिलेगा, बट ये हिल रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पानी की बोतल रखूंगा। आई शो यू अ टाइटैनिक सीन, रेप्लिका ऑफ टाइटैनिक सीन। मैरी क्रिसमस। तो अब ये शायद हमारा लास्ट वीडियो है। इट्स ऑलरेडी 12:30, सो हम लोग शायद अब सो जाएंगे थोड़ी देर बाद। रात को देखते हैं अगर बाहर जाके अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिला, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल आउटसाइड। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट इफ नॉट देन विल सी यू टुमारो at 5:30 for the sunrise. एग्जैक्टली। See ya. बाय बाय, गुड नाइट। Good morning. As promised, here we are at sunrise. I hope you can see it in my background. Sunrise हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Morning. अभी हमने सनराइज देखा है और बहुत ही सुंदर लग रहा था जब हमने देखा। हमने कुछ क्लिप्स शुरू में किए हैं, उसके बाद Wish you all the best I can, then I stop myself for a while. Good morning. अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं ईस्ट डेवनपोर्ट।
सो बेसिकली दिस ओवरऑल जर्नी रही हमारी 8 घंटे की. हमने बोर्ड किया था रात को 10 बजे, अभी बज रहे हैं 8. सो इट्स गुड. 12 घंटे 12. अच्छा बोल रही थी फ्लोई तो बोल देता. Yeah, so now we are done for the day 1. अभी हम कार में आ गए हैं, निकलने वाले हैं थोड़ी देर में बाहर. So we'll see you soon for our next trip and we'll share the plan and whatever we are going to do for that day. Please don't forget to like, subscribe and share this video. And stay tuned for more. Thank you.